हेलो एंड वेलकम, दिस इज शिखर। और आज का वर्कआउट है टू लर्न सम हैकिंग, नॉट कंप्यूटर हैकिंग। हम सीखेंगे जो जिम वाली एक्सरसाइजेस होती हैं हम घर पे कैसे कर सकते हैं। सो वी विल डू 5 इक्विपमेंट हैक्स फॉर एक्सरसाइजेस एट होम। लेट्स डू इट। सो द फर्स्ट हैक इज गुड ओल्ड वाटर बॉटल्स। वाटर बॉटल्स हम क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो गुड ओल्ड जंपिंग जैक्स, एड सम वेट टू इट। हम शोल्डर स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। तो when the legs open, the hand goes up. अगर फुल बॉटल आपको ज्यादा लग रही है, you can do it half, no problem. Second, let's work on triceps. So instead of keeping like this, keep your hand like this. Elbows straight, and then when legs open, पूरा straight ले जाएंगे. Now we are also working on the triceps. What next? We can do side raises. Keep it straight, raise and hold, down, raise and hold, down. You can also work on mobility. इसी में just like you are pouring water in a glass and back, down. हम shoulder rotator पे भी काम कर सकते हैं। Up, pour in the glass, straight, down. लोग पूछते रहते हैं arm toning. Again, excellent exercise. Keep your hands up and do some punches with a filled water bottle. But don't drop your hands. Keep your hands up. Alright? So these are some exercises we can do with bottle, but there is more. Let's see. We can also do shoulder presses. So keep your arms nice and straight. It's always better to work on both the arms separately. When this goes up, hold this one. You can also do work on. So here are two things. So when we breathe in, take it back. When we breathe out, take it forward. So then we are working on the back muscle. Now, we can also do a lot of other exercises with bottle. So what we will do is put these bottles in a bag. And do some squats. Hold it. In squat, hip goes back first and then go down, maximum and up. What more? We can hold it like this and do squat and press. So we go to squat and press up. Squat and press up. Now there are a lot of other things we can do with the back. So we are holding it like this. Hold up, down. सिर्फ इसको बॉडी के लाइन के बराबर तक ही लाना है. Now we are working on the triceps and the back. Legs. Change कर सकते हैं. हम बैक के साथ बहुत सारी एब एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो वी गो डाउन, होल्ड इट अप, नेक्स्ट हम कर सकते हैं रशियन क्रंचेस. सो वी होल्ड द बैक एंड वी कैन डू वेटेड लेग रेजेस. So सीधे लेटेंगे and raise. So this was the first hack, bottles. और bottles को हमने बैग में भी रख सकते हैं. Hack number 2 में हम यूज कर रहे हैं एक बकेट, नॉर्मल बकेट. और उसमें वेट डालने के लिए वैसे पानी भी यूज कर सकते हैं, बट पानी से क्या है वो स्पिल होगा और स्लिप भी हो सकते हैं, रूम भी खराब हो सकता है. So what I have used is wet clothes. जो गीले कपड़े हैं वो यूज कर रहे हैं. उससे अच्छा वेट भी रहता है और स्लिप की प्रॉब्लम भी नहीं होगी. तो अब इससे हम क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं. नंबर 1, डेड लिफ्ट. बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज है जो लोग सोचते हैं घर पे नहीं हो सकती. सो वी विल यूज दिस बकेट फॉर डेड लिफ्ट. सो डेड लिफ्ट सिंपल. वी गो डाउन एंड कीप योर बैक एब्सोल्युटली स्ट्रेट. लुक फॉरवर्ड, अप एंड डाउन. सो अज्यूम मेरी टी शर्ट पे कुछ लिखा है
तो जब मैं ये डेडलिफ्ट परफॉर्म करूंगा तो आपको सामने दिखते रहना चाहिए. सो बेसिकली एज कोचेस से चेस्ट अप. So look again, we go down, up. Next, what we can do is rows. Something for the lats, जो V shape body चाहिए होती है उसके लिए. So उसमें क्या करेंगे? Same, back हमारी bend रहेगी, and but back arc नहीं होगी, straight. Lift up, hold, down. Now, if you want to do some heavy squats, you can use the bucket to do some heavy squats. You can use single hand carry. So, you can just carry it. It's absolutely good for the triceps. So just carry forward. You can walk long terrace walks, walk in your home. And you can always, you should always change your hand. So you will feel the pressure on triceps, and it's an excellent exercise. So hack number 3 is a normal chair. So chair के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो you go down and up, just like half squats, down and up, keeping back straight. Even senior citizens can do this. हाथ का support लेके down and up. Now to make it challenging, we keep one leg in air, down and up. Similarly, we can change leg, down and up. We can do leg raises with chair. So keep chair like this, leg raise, into out, out to in, into out, out to in. Depending on your flexibility, you can go higher, and then we can change. So this was exercises we can do on the chair, and there are a lot more. So we can sit and stretch back, stretch both sides, go forward and up, do a lot of breathing exercises, and we can also bend our back. So there's a lot of possibilities with the chair. So this was our equipment hack number 3. So equipment hack number 4 is a sofa. I am using something like this. आप अपना normal sofa, heavy sofa कुछ भी use कर सकते हैं. So we can do heavy deadlifts on it. So same way, we go down. Now if you have not done deadlift ever, so please stick to the bucket वगैरह जो हमने सिखाया. और अगर आप करते हैं, so you can use heavier object like this. So we go down, lift up. We can also do tricep pull-ups on this. Tricep. So we hold. अब पूरी palm पे weight लेना है, and we can go down. जो lower belly fat होता है, उसके लिए what we can do is we can get on a plank position on a bed or sofa. Take a deep breath, fill your diaphragm with air. हवा यहाँ पर भरनी चाहिए. This should go like this, expand. So expand and then hold. So this is to tighten up this area. And then there are a lot of other exercises we can do with the sofa. So we keep our legs up. So if you were missing the inverted chest exercises in the gym, you can always use a bed or sofa to do those. This was hack number 4. Hack number 5 is not the mat, it is the wall. अब wall के साथ हम बहुत सारी exercise कर सकते हैं. So in fact, there is a separate video also, the wall workout videos. So what we can do is exercise number 1, simple, squat hold. So we go down, take support of the wall and hold. So this you can measure it up. You can measure it up. So for example, आज आपने 30 सेकंड किया. So next time try to do 35, 40, 1 minute. So this is for immense leg strength. Excellent exercise. When we do wrestling, this is a go-to exercise we always do. What we can do is we can do wall walks. So wall walk is something like
हमें वॉल के ऊपर चढ़ना है और वापस आना है. सो आई विल शो यू हाउ. सो वी सिंपली गो अप और हम जितना वॉल के पास जा सकते हैं उतना करें. ट्राई टू टच योर चेस्ट ऑन द वॉल एंड देन स्लोली वॉक. So try to do as many as you can. 1, 2, 3, whatever you can. Now what next? Wall के साथ हम कर सकते हैं ज़्यादा effective mountain climbers. So normally mountain climbers यहीं से करते हैं, but when we do it on the wall, it is double the power. So keep your legs up, and then mountain climbers. Depending on your skill level, you can do fast और slow down. वर्कआउट एंड करने के लिए हेडस्टैंड शीर्षासन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. सो अगेन वी कैन यूज द वॉल. सो व्हाट वील डू इज देयर आर फ्यू वेज. हाउ आई डू इज आई कीप माय हैंड्स राइट हैंड लाइक दिस, लेफ्ट एंड लॉक माय हेड इन बिटवीन. सो आई विल शो यू फ्रॉम दिस साइड. माय हेड इज लॉक्ड. लिफ्ट योर नी अप, वन लेग गोes up and then slightly go up. I can do without wall also, but you should say take support of wall and it's excellent. So wall का support कैसे लेंगे? ऐसे wall का support लेंगे और एक एक leg hold कर लेंगे. So bring your right forward, left forward. फिर धीरे धीरे जब आपकी strength बनेगी, then you can hold both the legs and then count your time. So this will be your improvement of Shirsasana or headstand. And when you come down, always relax first, let the blood circulation normalize. Make your fist and head down, relax. So these were some exercises we can do without purchasing any equipment. So हमने use किया bottles, bag, chair, sofa, bucket, wall. By the way, you can also use stairs, which I have not showed in this video. Stairs को हम skip कर सकते हैं. So skip, jump, weight के साथ स्टेयर को क्लाइंब कर सकते हैं. Again, excellent workout. So this was 5 exercises, 5 equipment hacks we can do at home for a complete workout. We can make different sort of बहुत सारी अलग-अलग exercises हम कर सकते हैं इन equipment hack के साथ. So everyone, please stay safe, stay indoor as much as possible. You were with me, Shikhar.